Air University, Multan. Today we have gathered here to explore one of the most dynamic and fast evolving area in the world of technology computer networks with the integration of artificial intelligence, 5G, cloud computing, IoT and cybersecurity. The landscape of network is transforming rapidly and it's crucial for students, educators and professionals alike to stay updated. It is indeed an honor for us to have a distinguished guest with us today, Dr. Arif Hassan Rashid, lecturer, Department of Computer Science, Virtual University of Pakistan, who has joined us as the guest speaker. He brings with him deep expertise, valuable insights, and passion for knowledge sharing in the field of computer networks. We hope this session will broaden our understanding and spark new ideas and inspire us to adopt to latest advancement in the ever-changing domain. Without further delay, I would like to invite our respected guest speaker, Dr. Arif Hassan Rashid, to kindly come forward and begin his presentation. Please welcome him with a big round of applause. Thank you very much for inviting me for talk on the emerging topics in computer networks. But there has been a lot of developments in the recent era in the networking domains. The architectures have changed. The new wireless features have been emerged, and there is also different types of different demands from the different user side. For example, from the industries and from the business users and the domestic users, also from the business institutes, etc. We have also seen that artificial intelligence have exploded basically in the last 10 years, especially in the last 10 years. And that has also changed the basically the expectations that networks have to how the networks should be there to get to cater those requirements. This is not only in terms of the end user requirements, but also there is a lot of revolutionary changes from the network provider's point of view. So let's start with the discussion. Uh, uh, as Dr. Ghani has already expressed that my name is Dr. Arif Hussain. I have PhD from Comsat Sir, sorry University, to disturb Islamabad. you. Yeah. Uh, थोड़ी सी आवाज आपकी ना कम आ रही है अगर आपका माइक थोड़ा सा आप जरा ऊंचा बोलेंगे फिर यहाँ तक Okay. आवाज आपकी Is it ऊपर okay? आएगी Is it okay now? ठीक है सर थैंक यू Okay. Thank you. Okay, I have a lot of experience basically in the networking industry also, especially in the network development of the IP core networks, transport networks, and the mobile and other access networks that falls into the cellular networks category. I have also extensive experience in technology strategy, especially focused on fixed and wireless networks in the telecom sector in the Middle East and Asia regions. In addition to this one, I have 10 years of academic experience in the academia, where I have been starting different courses to network and security students and different courses with specialization in the IT सर चैट systems and देखो networks. सर जी Okay, is it for me? I have also led several high value projects in Middle East. Especially, you may have heard about the GPON project. In fact, the Abu Dhabi was the one of the first capital that was where the GPON was completely rolled down as the high speed access. In addition to this one, I have also some high impact factor publications in networks and artificial intelligence. So let's begin. I mean, that was my introduction. What we will talk basically today, we'll talk about. We need to talk about the emerging trends in the networks. The first thing is important to understand how the networks have evolved. I mean, the networks that we see today, we have a smartphone, we have different types of smart devices that over which we can communicate in different ways. There is video calls also possible, there are voice calls possible, even the recording and emails and multimedia, different things we can do.
So, but behind this one, there has been a long story, and many people have worked on this one. So we will look at the different stages where the networks have changed. We'll also look at the requirements, how the requirements have changed, because there was some changes in the related fields. For example, the computing and artificial intelligence. So also the industry was changing. So there was these all things were basically related. Then we'll talk about the different topics which are important, and they have some emerging concerns. I mean, where either some research is required, or some improvements needs to be introduced. Then we'll look at the how the future intelligent networks are. I mean, we expect that there will be a lot of things new into the networking infrastructure. So let's start with the evolution of networks. As I have discussed before, we'll look at the three different dimensions for the network evolution point of view. What is it? The first thing is the networking technologies. Second is the requirements, and third is the related fields. From the networks point of view, or from the period basically point of view, from 1995 to 2030, we can divide it into basically five main periods. One is starting from pre to the 1995, and then 1995 to 2005, and then actually there is a 10 years difference where there has been a lot of developments have taken place into the networks. So before to 1995, the networks were it was a pre-era. I mean, the although the concepts of the networks existed, but and there was a usage, but that is generally known as the pre-networking era. Then from the 1995 to 2005, it is known as the even up to the 1995, it was the legacy networks. The major focus was on the voice communications, SMS communications, and the concepts of the data communication were not there, and all the networks were basically circuit switched. There was a lot of time domain switching, and the concepts like SDH, PDH. Maybe you have heard, or maybe most of our us you even not have heard. Because although they are taught in modern networking courses, but they are quite old now. But there was a time when the legacy networks heavily dependent on the time domain switching concepts and circuit switch calls. The these networks were very the capabilities of those networks were very low, although they were very sufficient to provide the voice communications and short messaging like these things. Then from 1995 to 2005, there was developments in the data communications also, because the internets were also being researched, and they have already emerged even to the pre-era of the networking. But generally there was a difference between what was used to provide the voice and communications calls, or what is known as the telecom sector. IP was not there. Mostly the telecom sector was focused on the circuit switching, but IP still was there in the data side. But these two separated in the separate silos. So in the 1995 to 2005, the major focus was to make everything IP aware, so that we can use the capabilities of the statistical multiplexing that IP provides in as compared to the TDM. That's because not resource efficient. There is a lot of different networking resources which are wasted basically. So from that point of view, the major focus in the networking industry was to shift the all kinds of communications to IP, even the end users to the core networks, to the transport networks, and all the different components that networks reside. With this one, when we talk about the IP networks, there was a formal a new architecture, network architecture was also introduced. There was an access layer backbone, and then service delivery domain was there, and some service development concepts were also introduced. Then from 2005 to during the 2005 to 2015,
a concept emerged which was known as the next generation networks. Even in the IP networks, all IP networks, we were emulating the calls, I mean the legacy calls over the IP networks. So that was basically an issue. With the next generation networks, there was a lot of developments that took place. There was a thing that is known as the conversions. Many networks that existed in the even in the enterprises or the telecom sector, they were merged together. I mean, if we look at the diagram, the enterprise networks, sensor networks, enterprise networks, they all had the same core and the same aggregation layers and etc. There was a one core, and the services were delivered on the top of that common core. And 2015 to 2015, there has been a major focus shift where the networking technologies in terms of the transport networks, wireless networks, and how the networks are operated, they have changed. In this same era, the computing paradigms have also changed. The artificial intelligence have also exploded. There is a lot of development. So we call this as a recent trends. And formally, we think that by 2030, there will be a new kind of networks that have intensive support for the artificial intelligence with the most advanced technologies that can provide high-speed access and low latency services. From this point of view, if you see in these eras, there was different types of network generations that was introduced by ITU, International Telecommunication Union. Normally, before pre-era and the legacy era, they were called as the first generation of the networks. Then all IP networks. There was a concept of 2G and 2.5G, then 3G came, and then 3.5G came, and early 4G was also there. And recently we see that 4G plus 4G and 4G, 5G is also there. There is also some of the standard development organizations who are working for the 6G and 7G. In fact, some people have already experimented the 60 networks in the for their trial purposes or in the lab environment. So we'll see that how the different things are coming into the these different periods. If you see, the data rates have basically exploded from the pre-era networking era to the to the current era. There was a time when we were only interested into making the voice calls, and the data communications or the internet access was very slow. It was 2.4 kilobit per second over the wireless and 56 kilobit per second over the dial-up networks. We were forced to use the dial-up networks at that time. Then in the all IP era, the fixed networks speed was basically changed to the 10 was possible 10 megabit per second. But still, over the wireless networks, we could only achieve the maximum speed of 384 kilobit per second. In NGN, it increased. It went to the 1 gig and 100 Mbps. And in the recent trends, if you see, as the China, as you might have heard, that China has tested the 10 gigabit per second wireless networks that can provide the 10 gigabit speed to the wireless end user devices. And for the future networks, we expect the even more to that, more to that. The target is to provide the 100 gig capability, more than 100 gig capabilities for the fixed networks, and for the wireless network, at least 100 gigabit per second should be possible. This is, this is too much data. The people who have been using the internets and networks before, for them 100 gigabit is the very high data rate. They might be thinking that there was a time when even the core networks or the backbone networks were not capable of providing the 100 gig capability. But what is the application that will come up in the 2030, by 2030, that it requires the users to have the 100 gigabit per second? That's amazing. This is because the computing paradigms have changed, the user requirements have changed, the network users have changed, they have evolved, and there is new capabilities that are required, that requires the high data speed and low latencies.
And from the key technologies point of view, we see that in these different periods, different technologies evolved that were some of the PST and X25 analog in the legacy area, and GSM was introduced. GPRS was for data, and GPRS and Edge was for the data communications over the wireless communication, wireless networks. DSL was for the fixed, and early Wi-Fi was also introduced into the all IP era. Then we heard about the UMTS, and that came with the HSPA, and then we also heard seen the LT, which is the long-term evolution. We also see that IMS in IP multimedia subsystems have been introduced. That actually they were the basically the core key component that enabled the convergence of the different kinds of networks, the fixed networks, the mobile networks, and even the business services are the point-to-point links that that was providing for the different industrial purposes. Then Wi-Fi and different versions came. VDSL was also introduced for the high-speed access. Recently, we have seen that LTE-A, long-term evolution advanced version, has been introduced. 5G new radio has been also introduced. Fiber to the home has come. That has basically removed all the limitations on the access side. I mean, we can deliver whatever the highest possible data rate is theoretical possible over the fiber optic cables, and we know that theoretically the basically the data rate that can be transported over the optical links is unlimited. There is a lot of possibilities, especially the WDM and DWDM and CWDM technologies that offers the very high speed networks. And in this era, we have also seen that SDN has emerged, and network function visualization has emerged. These are basically the two key technologies that have emerged in the recent era. These have changed the networks completely. The network architecture is changed, how the networks are operated, what kind of service, how the services are operated, what kind of people are required. These all have changed, and we'll see that SDN and FFE has completely revolutionized the networking domains. Yeah, whatever the field is possible, whether it is the telecom networks, whether it is the enterprise networks, or even the smaller home offices. In the currently, beyond to the 2025, we have also some new concepts emerging. Actually, still many people are working on those one. For example, the use of the terahertz bands, and there is an IRS that provides a lot of coverage, addresses the different coverage issues and the for the wireless networks. Then you see there is a AI native, artificial intelligence nativeness. This is for the both for the networks. I mean, the all the network components will be intelligent. They can optimize intelligently. They can make decisions depending on the different situations. They can resolve the problems. They can detect the user states. They can detect the network state, and then can optimize the networks without the human intervention, without requiring the people to wait a lot of time. There has been also some talks about the quantum networking. Currently, although there is a lot of expectations from the quantum networking that will completely, this will be the second highest, biggest change when the quantum networks will be introduced. But currently, the quantum technologies, that the quantum concepts are very limited to the cybersecurity and the privacy, data security purposes only. And in this case, from the key services point of view, we have seen that there initially there was a voice and fax and dial-ups like these services, but today we have OTT, which is over-the-top services. Cloud gaming is there. IoT and industrial IoT is there. Smart homes are there. There's a holographic applications that needs to to communicate with the different networking components or with different servers. Then there is a extended reality also, real-time AI is also, digital twins concepts is also there.
From the spectrum point of view, in the wireless networks, there was a time when we were only limited with the 800 to 900 megahertz spectrum. But that was in the all of IP network era. 850 and 1800 and 1900 was also introduced. Then in the NGN era, there was 1.8 and 2.56 gigahertz, 2.4 and 5 gigahertz for the Wi-Fi networks. Recently, you have seen that the sub 60 frequency band has been also introduced, and millimeter wavelength has been also introduced to provide the quite high speed communications over the wireless networks. We'll see that in the future there will be new frequency bands that will be open, that will provide the extended capabilities in terms of the coverage in the high data rates and spectrum management. From the wireless features point of view, initially the major focus was basically to communicate over the distant links or to provide the connectivity डॉक्टर since साहब the data सॉरी टू requirements. डिस्टर्ब यू, अगर मोड ऑफ कम्युनिकेशन थोड़ा सा हाइब्रिड कर लें, उर्दू इंग्लिश मिक्स कर लें, तो एक रिक्वेस्ट आई थी पीछे से स्टूडेंट्स की। ठीक है, कोई मसला नहीं है। शुक्रिया सर। सो इन पीरियड्स के दौरान अगर हम देखें तो हमारी जो वायरलेस कम्युनिकेशंस के अंदर काफ़ी सारी चेंजेस हो रहा है। इसमें सबसे पहले जो है, हम अगर देखें तो जो इनकोडिंग स्कीम्स थी और जो मॉड्यूलेशन स्कीम्स थी, उस इनिशियली देवर नॉट वेरी मच, इनकी बड़ी बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं होती थी, लेकिन नई स्कीम्स है जो ना वो इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं। फिर एनजीएन के एरा में जो ना माइमो का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया कि हम मल्टीपल एंटीनास को यूज़ कर सकते हैं एक ही कम्युनिकेशन चैनल बिल्ड करने के लिए। फिर बीम फॉर्मिंग का कॉन्सेप्ट आया। फिर अभी हम रिसेंटली अभी भी देख रहे हैं कि वो जो 2x2 और 4x4 और 8x8 का जो माइमो कॉन्सेप्ट था, आपने देखा होगा कि अक्सर अगर आपने होम जो हमारे घर में राउटर्स लगे होते हैं, कुछ राउटर्स ऐसे होते हैं जिसके ऊपर 4 एंटीनेस लगे होते हैं, किसी के ऊपर 8 लगे होते हैं और 12 भी लगे होते हैं। अगर आप मार्केट में जाएँ तो जो ना उसमें देखेंगे तो कुछ लोगों का अक्सर वो सोचते भी होंगे कि क्यों इतने ज़्यादा एंटीनास क्यों हैं। तो बेसिकली दैट्स द व्हाट इज द कॉन्सेप्ट फॉर टू इम्प्लीमेंट द मैसिव माइमो, यानी कि आप एक ही जो कम्युनिकेशन चैनल है वो आप डिफरेंट एंटीनास के साथ उसको बिल्ड कर सकते हैं, ताकि जो इश्यूज़ मुख्तलिफ़ किस्म के आते हैं, यानी कि एक पॉसिबिलिटी भी ये भी हो सकती है कि हम हाई फ्रिक्वेंसी यूज़ कर लें, हम पावर लेवल्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दें, पर इसके साथ कभी भी डाटा रेट जो है इंक्रीज़ नहीं होता ना। इसी तरह से मिलीमीटर वेव का जो कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करवाया गया, और उसके अलावा बीम फार्मिंग के नए मेथड्स जो ना वो इंट्रोड्यूस करवाए गए, रिस्क जो ना वो इंट्रोड्यूस करवाए गए इस एरा में। तो वो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम देखेंगे कि किस तरह से इन्होंने नेटवर्क्स को चेंज किया है। और आप देखेंगे कि बेसिकली वो जो एक कॉन्सेप्ट होता था ना कंप्यूटर नेटवर्क्स का, कि दे वर मोस्टली फोकस्ड ऑन दी वायर्ड नेटवर्क्स और द फिक्स्ड नेटवर्क्स, दैट concepts do not remain nowadays. When we talk about the networks, we talk about the networks as a whole, whatever the technologies, whatever the type of medium is there, this is all unified as a one. The different technologies that can work as a one network. So from the standardization point of view, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू, आप देखें कि लेगेसी नेटवर्क्स में और आईपी नेटवर्क्स में दो ही चीज़ें स्टैंडर्डाइज होती थी, एक वॉइस और दूसरी एसएमएस। मे बी डाटा एट समवेयर the fax service was also standardized, and there was a lot of value-added services on the top of that one, but none of them was basically standardized from the standardization body's point of view. But in the end, next generation networks era, there was a standardization of the service that was called the EMBB. This is for the enhanced mobile broadband, and there was for low latency, there was URLCC was introduced, and for IoT sensor networks and for industrial automation, MMTC was introduced, but that's for the machine-to-machine communications. That was in the recent trends. Okay, we have today EMBB, we have today URLLCC, we have today MMTC. These services are available. If you want to use, industries can use, users can use. You may have already seen that
100 megabit per second internet access speed is also available. Even the higher speeds are also possible. The low latencies are low latency services are also available. In the future, there is expectation that there will be the E and U. All the services will have E. I mean enhanced EMBB service and enhanced URLCC service. इसी तरह से जो MMTC है इसमें हम एक और चीज़ M को increase करेंगे. That is the massive MMTC, where there is thousands of devices that is to communicate over the networks. When communicating with the thousands of devices, the sensors, of course this scenario makes sense because there is IoT is continuously coming into different fields. So with the IoT, there will be thousands of devices. If we see in the let's consider this the vehicles. I mean, if the vehicular networks are there, there will be a lot of especially in case of the electronic vehicles. I mean, we see that needs to communicate with each other to avoid different things, to calculate the routes and to calculate the different things that are basically important from the driver's point of view, sorry, and also from the networking point of view. So the concept of massive MMTC has been also introduced. We see that it will be by 2030 will be there. And from the computing evolution point of view, you see traditionally we had the single computers working for it a single task. The multiple things can be, although in a smaller setup and the in user setup हम आमतौर पे एक ही मशीन को यूज़ करते हैं, यानी कि उसके ऊपर डिफरेंट एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे होते हैं. फिर एक कॉन्सेप्ट आया था, लेकिन चूँकि एक सिंगल प्लेटफॉर्म की कंप्यूटेशन कैपेसिटी बहुत कम होती है, और तो उसके वो जो ना of course one way is to increase the capabilities. Of course the computing platforms have increased. There was a time then when only 133 megahertz very slow processors were there, especially in the 1995. In our IP networks era, although the computing platforms were evolved, but grid computing was introduced, and the SAS was also introduced. Then in the NGN era, new virtualization technologies and infrastructure virtualization and cloud computing storage was introduced. And recently we see also the edge and fog computing and cloud native services, and the serverless trends are also there. In the future, there are talks about the distributed computing systems and the quantum computing also. These visions are there, but that may take some time to realize those things. From the end user point of view, this has changed a lot. Basically, this is the user which derives that how the network should be there, what kind of how much should be the speed of the network or the throughput of the network, how much latency is there, and it depends what kind who is the customer. If customer is a home user, he might be only interested in internet and voice and like these things and videos. So for him, maybe the very low latency might be irrelevant, because he will often explore browse the internet or send any emails or do different things or play videos. For them there is some limits for the I mean all the video streaming, basically the applications that can tolerate a very reasonable latency. But from the industrial side, and especially if we talk about the critical services like the remote surgery, these kinds of services are basically very sensitive to the the latency, and their reliability, they requires also very high reliability. I mean, of course it is not possible when an operation is in progress. We cannot expect or we cannot tolerate any kind of delay even in 1 millisecond or in microseconds. So this is thing the users have changed. We see now the industrial automation is there. Our cars are becoming internet connected. Our different things are, even the solar systems and ubiquitous computing and pervasive networking concepts are also there. So these are all driving different changes in the networks. This similarly is from the intelligence point of view.
In the previous eras, usually the user terminals are, for example, if we consider our mobile devices, they were not intelligent. I mean, they were dumb devices. Of course, they had some kind of automation of some script that can be triggered on some certain conditions, but they were never basically the intelligent or capable to make decisions. But the recently, what we have seen that our smartphones are now becoming more intelligent. They have different different kinds of assistants available on the assistants on the mobile devices are available, like Google Assistant or Apple Siri. These all things are now coming into the picture. Moreover, the how the network devices are working, they are also becoming intelligent. The mobile devices can differentiate between different services and the different packages and the network capabilities. They can predict the call quality. I mean, before starting a session, they can tell you whether your call will be successful, or what kind of quality you will have, or what kind of issues you will see. So similarly, in the future, it is expected that the intelligence will be pervasive. It will be all around us, and almost everything that we will have around us will be network enabled, and it will be intelligent. This is the different networks, different evolution, different things that we have seen in the networking era. The As the networks were evolving, there has been a lot of developments in the AI and machine learning evolution also. I will not talk much into the detail on this one, because maybe because we need to focus on the networking topics, but it is very important. We cannot proceed without artificial intelligence and machine learning. But the future networks that are coming, they will be we expect to be intensive use of machine learning and artificial intelligence. So let's have just a look at a brief look on the how the machine learning and artificial intelligence has evolved in the different periods that we have discussed before. In the legacy era, when the legacy networks were there, the artificial intelligence and the machine learning tech were basically in the foundational sides. Only the some concepts were, although the concepts were there, and some decisions, some basic classification and regression decisions and Q learning was also available. But however, it was not very popular, and their applications were very low. Similarly, in the all IP networks, some ensemble learning methods were there. Ensemble learning means you can have, from the networking point of view, we can have different decisions and then you can combine them. For this purpose, AdaBoost, random forest and like these things, algorithms were introduced. इसी तरह से जो ना कर्नल और एस वी एम्स वगैरह जो ना क्लासिफिकेशन रिग्रेशन के लिए जो ना वो प्रोवाइड किए गए थे इसी दौर के अंदर. फिर रिनाइंसस का दौर आया, जिसमें हमने मशीन लर्निंग के साथ बिग डाटा को भी जो ना वो देखा, क्योंकि मशीन लर्निंग जो ना ऑलवेज डिपेंड करती है बिग डाटा के साथ. फिर हमने देखा कि इसी दौरान जो ना वो जी पी यूज़ भी इंट्रोड्यूस करवा दिए गए ना, जिसकी वजह से वो जो इश्यूज़ थे कंपटीशन कम्प्लेक्सिटी के क्या वो जो ना इसमें रिजॉल्व हो गए. फिर इसी तरह से हमने देखा कि एक ऑनलाइन लर्निंग और स्केलेबल मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट भी इसी रिनाइसेंस में इंट्रोड्यूस करवाए गए थे. फिर मेच्योरिटी जो मेच्योरिटी का पीरियड था, वो जहाँ पे रिसेंटली मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेच्योर हुई है, तो इसमें जो हमारी ऑर्केस्ट्रेशन और ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग के जो ऑर्केस्ट्रेशन के जो डिफरेंट इश्यूज़ थे, उसके लिए ऑटो एम एल को इंट्रोड्यूस करवाया गया. फिर एम एल एज ए सर्विस को भी जो ना इंट्रोड्यूस करवाया गया रिसेंटली. फिर हम देखते हैं कि फेडरेटेड लर्निंग को भी जो ना वो हम इसके ऊपर काफ़ी काम हुआ है, और बहुत से एल्गोरिदम्स और डिफरेंट किस्म की रिसर्चर्स ने इसके ऊपर काम किया है. फिर ये कि इस दौर के अंदर, आई मीन रिसेंट ट्रेंड के रिसेंट पीरियड के अंदर, दिट वाज द फर्स्ट टाइम कि जब मशीन लर्निंग जो है वो रियल एप्लीकेशंस में यूज़ की गई थी. I mean, real deployments were there, especially in the health sector, in the finance sector, in the marketing sector, and different things. We see that machine learning was there. In the future, I mean, what we see, there will be AI agents, which are basically ML based, and there will be KaiOL ML concepts and quantum enhanced machine learning and tight regulation sharing thing. Because so far whatever we have seen, we have a lot of developments in the machine learning, artificial intelligence, but still there is a lack of regulation.
I mean, regulation means there has to be some fixed rules and regulations how the intelligence can be used. Although बहुत से लोग इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं, तो लेकिन ये है कि still this is in a very immature stage. In future, there will be some specifications and some laws will be developed that how AI and ML can be used in the real scenarios. अब ये तो बात थी मशीन लर्निंग की. अब हम इसके साथ ही एक और बात करते हैं कि नेटवर्क्स पे कैसे यूज़ हुआ. नेटवर्क्स में ये रिसर्चर्स जो ना रिसर्च लेवल के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर डिसीजन ट्रीज इंट्रोड्यूस करवाई गई, तो नेटवर्क रिसर्चर्स ने भी इसको जो ना ट्राई किया कि लैब के अंदर इसको हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. इन सेबल मेथड्स जो ना इंट्रोड्यूस करवाए गए, तो वो एक कंबाइंड लर्निंग डिसीजंस मेकिंग करने के लिए वो भी नेटवर्क में यूज़ किए गए. फिर इसी तरह से जब बिग डाटा का दौर आया और जीपीयूज़ आया, तो वहाँ भी इसको ना सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग नेटवर्क्स और कॉग्निटिव रेडियोस वगैरह में इसको स्केजुलिंग के लिए, रिसोर्स एलोकेशन के लिए ना यूज़ किया गया. फिर इसी तरह से जब मशीन लर्निंग के मॉडल्स मैच्योर हुए, तो एसडीएन भी उस वक्त जो ना आ चुकी थी, फंक्शन नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन भी आ चुकी थी. और ये दोनों चीज़ों ने बेसिकली एक डिसीजन मेकिंग को सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉफ्ट बना दिया था. आई मीन द कंप्यूटर्स हैव टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजंस. फिर इसके साथ जो नेटवर्क स्लाइसिंग भी इंट्रोड्यूस आई थी. तो ये जो मेच्योर मॉडल्स थे, फेडरेटेड लर्निंग के कॉन्सेप्ट थे या फिर ऑटोएमएल थी, इसको नेटवर्किंग फील्ड में भी डिप्लॉय किया गया. अब जो फ्यूचर में जो है, इसी तरह के जो डिफरेंट किस्म के इश्यूज करंटली मशीन लर्निंग के साथ एग्जिस्ट करते हैं. आल्दो कि अगर अब हम मशीन लर्निंग के और एक्सप्लेनेबिलिटी के मतलब थोड़ी सी बात करेंगे, अभी नेक्स्ट इसके स्लाइड में हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे एक न्यूरल नेटवर्क्स की बात की है. और न्यूरल नेटवर्क्स में कुछ डेवलपमेंट्स हुई थी इसी पीरियड्स के दरमियान. इसमें जो सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं, वो तो एक फाउंडेशन में बैक प्रोपगेशन वाज इंट्रोड्यूस इन 1986. और इसके बाद फिर अगर हम मेच्योरिटी लेवल में देखें, तो आज हमारे ट्रांसफार्मर्स हैं. अगर आपने चैट जीपीटी को सुना होगा, तो चैट जीपीटी इज़ वन ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट हैज़ इवॉल्व फ्रॉम द ट्रांसफार्मर्स मॉडल. फिर विजन ट्रांसफार्मर्स भी जो है इंट्रोड्यूस किए गए हैं. इसके अलावा जो फ्यूचर में वो स्पाइक्ड एन न्यूरल नेटवर्क्स का कॉन्सेप्ट भी जो है करता है, जो कि बेसिकली द सीक्रेट और टाइम ट्रिगर्ड डिसीजंस या डाटा के ऊपर भी ना काम कर सकता है. इसी तरह से सिमिलरली न्यूरल नेटवर्क्स में भी यूज़ होते रहे हैं. आई मीन डिफरेंट पर्पसेस में, क्लासिफिकेशन के लिए, डायनामिक स्पेक्ट्रम एक्सेस के लिए. इनकी हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वाली स्लाइड्स में. फिर एक कॉन्सेप्ट है डीप लर्निंग का. हमने बात की मशीन लर्निंग की, फिर हमने बात की न्यूरल नेटवर्क्स की. अब हम बात कर रहे हैं डीप लर्निंग में. कुछ लोग आपको इस हवाले से पता होगा कि डीप लर्निंग बेसिकली इज डिपेंडेंट ऑन दी न्यूरल नेटवर्क्स. But of course, it's not always that the neural networks are used for the deep learning. Neural networks can be also used for the shallow networking also. Because if you eliminate the hidden layers, why to reduce the hidden layers, and what is the relationship here in terms of context? We will talk about when we talk about the explainability and interpretability. So because usually when there are a lot of hidden layers, the operation of neural networks becomes basically the black box operation. I mean, we don't know how the decisions came into the how the particular model may have made that decisions. For the deep learning, there was a lot of developments. CNNs were introduced, Alex networks was introduced, and DQN was also introduced in the Renaissance era. In the maturity, currently we see the GPT-3, ChatGPT is there, DeepSeek is there, and there are some dual message models also there, and some other things that are that have been introduced recently. And in the future, for the deep learning, there is a major focus on the multimodal, deep learning methods and the generalization of generalist methods. I mean, that can be a model that can perform all types of decisions. We will talk about the holistic learning. What is the holistic learning, and why networks are required, and then we'll talk about the why to use the generalist networks. So that's the things we see that today. Current state of the art is basically that we have different kinds of algorithms. For example, gradient boosted decision trees are there that provides a high performance in structured tabular data.
and then random forest, extra trees. These are the machine learning basically algorithms which are currently being used. I mean, they are the latest things. Then we have the AutoML, AutoKeras, Google AutoML, H2I, and there is also some framework proposed by ITU, International Telecommunications Union, which is basically the MLPL, machine learning pipelining. So at this time, I think it's you just have I think you just need to understand that these models are there, how they work, how we can use in the networks. Of course, it will be you will look at in future that how things will be working with those things. Similarly, for the deep learning, we have a lot of developments. Basically, there's large language models like GPT, Gemini, Claude, NLM, and vision transformers concepts are there. Time series analysis, there is LSTMs and TFTs and beats are also introduced. Then for the reinforcement learning, which is very important from the networking point of view, there has been DQ, and that basically combines the reinforcement learning with the deep learning. And there is a deep mind also. Mo0 was also has been also recently introduced. Graph AL is there. GCN networks for graph neural networks are there, and similarly the encoders and SVDDs models are also available. We will have a look at them shortly, that how they are used in the networking domain. So what we can conclude, we see that requirements are changing. Intelligence is becoming a key parameter, and dynamicity and the heterogeneity is coming into the picture, and there is a adaptation. I mean, the things needs to be adopted to those requirements. And another thing that we have seen, that there have been a lot of developments in the technologies, the capability to provide the higher data rates, improved wireless features, and new emerging features. New networking paradigm has been there, in especially the SDN and NFV and network slicing, like those things. And there is also some talks about the automation and orchestration. In the from the requirements point of view, see there is emerging markets, new types of user industries are becoming network aware. They have the requirements of high bandwidth and low latencies. Intelligent devices are coming into the picture, and the number of users who are using the networks, they are also increasing. The type of different users is also increasing, and some critical services, like we talk about the remote surgery, like these things have been also introduced in the from the requirement side. So if we look at this one, in the networks, I think the people who have you have already studied the basic concepts of networking. One of the things that we have seen in the requirements, the higher data rates. There we have seen that networks can provide the higher data rates today. It can provide up to 10 gigabit per second, both on the fixed and also on the wireless networks. But the thing is, there are few things that we need to understand, that for the if we are looking from the emerging trends point of view, we need to see what are the different पैरामीटर्स और द डिफरेंट थिंग्स जो कि डाटा रेट्स के ऊपर जो कि डाटा रेट्स को बेसिकली ड्राइव करती हैं, यानी कि जिनकी वजह से डाटा रेट को इन्हेंस किया जा सकता है या इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले स्पेक्ट्रम है, फिर मॉड्यूलेशन है, फिर एक नेटवर्क की कन्वर्जेंस है। हम इन दोनों को देखेंगे, तीनों को देखेंगे कि किस तरह से स्पेक्ट्रम, मॉड्यूलेशन और कन्वर्जेंस जो ना, इसको हम हाई डाटा रेट्स को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज़ द वेरी ABC ऑफ द नेटवर्क। वी नो दैट जो हमारा डाटा रेट होता है वो ये शनान की जो इक्वेशन जहाँ पे दी गई है कि बेसिकली जो डाटा रेट है दैट इज़ डायरेक्टली वो जो ना उसका एक रिलेशनशिप होता है B log 2 and 1 plus SNR. SNR, B is the bandwidth, I mean how much the width of the we are using for the transmission. अब ये है कि हायर जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं उसके ज़रिए अगर हम उसको यूज़ करें। डॉक्टर साहब, जी जी अगर हम क्यूए सेशन शुरू कर लेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बड़ा कम है। ठीक है, और इसको ठीक है हम करते हैं। अब ये कि जो हमारे हायर डाटा रेट्स होते हैं वो हम
फ्रिक्वेंसीज़ को इधर स्पेक्ट्रम की विड्थ को चेंज कर सकते हैं, या फिर हम हाई फ्रिक्वेंसीज़ को यूज़ करें तो हम जो ना वो हाई डाटा रेट्स जो ना वो अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमारे जो डिफरेंट किस्म के स्पेक्ट्रम है इस स्लाइड के ऊपर शो किया गया है कि 2G, 3G, 4G, 5G। हम देखें कि अगर ये सारी टेक्नोलॉजीज़ हाई डाटा रेट्स प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन इनके अंदर जो ना वो जो फ्रिक्वेंसी बैंड्स हैं और फ्रिक्वेंसीज़ जो ना वो भी उसको जो ना वो इंक्रीज़ हो रही हैं। लेकिन फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ करने के और चैनल विड्थ को इंक्रीज़ करने के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ कर देंगे तो आपकी कवरेज जो ना वो कम हो जाएगी, आपको डिस्टेंस रीचेबिलिटी जो ना वो कम हो जाएगी। और इसी तरह से अगर आप विड्थ को जो ना कम कर देंगे तो जो जिन दो ऑपरेटर्स हैं उनके लिए जो ना वो बिज़नेस मॉडल जो ना वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा, क्योंकि आप यू विल बी एबल टू ओनली सर्व इन फ्यू कस्टमर्स। सो इस पर्पज़ के लिए जो ना डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स हैं जो आमतौर पे यूज़ की जाती हैं, जो आप यूज़ कर सकते हैं बेसिकली। इसमें एक डायनामिक स्पेक्ट्रम एलोकेशन है, जिसमें आप जो ना बुनियादी तौर पे देख सकते हैं स्पेशली मशीन लर्निंग को या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए कि किस लेवल के ऊपर या किस पीरियड्स के दौरान कौन सा स्पेक्ट्रम जो है कौन सी फ्रिक्वेंसीज जो है वो यूज़ हो रही हैं एडजेसेंट चैनल्स में या दूसरे लोगों के साथ। तो उसमें फिर अकॉर्डिंगली आप जो फ्री जो चैनल्स हैं या जो फ्री फ्रिक्वेंसीज अवेलेबल हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह पे एक और इसी की एक सेपरेट वर्जन है जिसमें स्पेक्ट्रम सेंसिंग और प्रेडिक्शन की है। इसमें आप जो ना वो जो स्पेक्ट्रम की यूटिलाइजेशन है उसको देख सकते हैं और फिर ये प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किसी गिवन टाइम के अंदर हमारे जो ना वो स्पेक्ट्रम की क्या स्टेटस होगी। इस चीज़ को डिटरमाइन करने का हमें फ़ायदा ये होता है कि हम ये चीज़ डिटरमाइन कर सकें कि हम कितनी स्पीड जो ना या कितना डाटा रेट जो ना वो एक गिवन टाइम के ऊपर जो ना सप्लाई कर सकते हैं। फिर इसी तरह से इंटरफेरेंस डिटेक्शन भी है, क्योंकि मल्टीपल जब ट्रांसमीटर्स जो ना वो मीडियम में काम कर रहे होते हैं तो उससे इंटरफेरेंसेस जो ना वो के इश्यूज आ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ये एक मेथड है कि जब हम इंटरफेरेंस को डिटेक्ट करके और उसको फिर मिटिगेट कर सकते हैं। फिर चैनल की स्टेट प्रेडिक्शन का भी जो ना पॉसिबल जो ना वो एक मेथड है कि जिसके ज़रिए से हम अपने डाटा रेट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब दूसरी स्कीम जो है वो मॉड्यूलेशन है। अब मॉड्यूलेशन में जैसे हमें पता है कि बेसिकली जो नंबर ऑफ़ सिंबल्स होते हैं उस पर डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं हमारे डाटा रेट्स के साथ। अब ये कि अगर हम नंबर ऑफ़ सिंबल्स इंक्रीज़ कर दें यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे जो ड्राइंग में स्लाइड पे दिखाया गया है कि जैसे ही हम नंबर ऑफ़ सिंबल्स इंक्रीज़ करते हैं डाटा रेट तो हाई हो जाता है, लेकिन उसकी रिलायबिलिटी जो ना वो लो हो जाती है। सो देयर आर सम इश्यूज़, हमें वी आर इन स्टक इन सम थिंग्स जो कि हमें देखनी पड़ेंगी कि हम इनको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। इस पर्पज़ के लिए भी कुछ अगर हम देखें तो जो हमारी करंट टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे वाईफाई 6 है, LTE है, 5G न्यू रेडियो है, इसमें मॉड्यूलेशन के लिए डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। हम अडाप्टिव मॉड्यूलेशन स्कीम्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किस वक्त यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है, किस सिनेरियो में यूज़ करनी है, किस जगह पे यूज़ करने के, इसके लिए हमें कुछ रिसेंट अप्रोचेस जो ना हमारे पास अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो अडाप्टिव मॉड्यूलेशन एंड कोडिंग ऑप्टिमाइजेशन की एक जो ना वो आप मेथड यूज़ कर सकते हैं कि हम ये देखें कि करंट जो ना रिक्वायरमेंट क्या है, यूज़र्स के साथ उसको लिंक कर दें, या फिर यह है कि हम एंड टू एंड लर्निंग बेस्ड मॉड्यूलेशन में देख रहे हैं, हम ये डिटरमाइन करें कि हमारे नेटवर्क्स में यूज़र्स की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं या फिर करंट इंटरफेरेंस के लेवल्स क्या हैं। तो इन तरीक़ों से हम जो ना वो इनको मैनेज कर सकते हैं। फिर इसके अलावा हम मॉड्यूलेशन की क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन द इंटरफेरेंस अवॉइडेंस और जॉइंट रेस्क्यू एलोकेशन और मॉड्यूलेशन टेक्निक्स के ज़रिए से भी। फिर अगर हम कन्वर्जेंस की बात करें तो कन्वर्जेंस का मतलब यह है कि हम सारे नेटवर्क्स को कंबाइन कर दें। हमने पहले बात की तो IP मल्टीमीडिया सब सिस्टम, दिस वाज द कोर कंपोनेंट दैट अलाउड द डिफरेंट नेटवर्क्स, जो मुख्तलिफ किस्म के नेटवर्क्स थे उनको कन्वर्ज करने का। अब कन्वर्जेंस में ये है कि फॉर एग्जांपल हमें पता है कि वाईफाई की स्पीड जो ना हमेशा हाई होती है, डाटा रेट्स का हाई होता है, जो कि हमारे मोबाइल डिवाइसेस होते हैं उसमें जो ना वो काम तो उसकी डाटा रेट की जो ना स्पीड आमतौर पे कंपैरेटिवली कम होती है। तो इसमें एक कन्वर्ज नेटवर्क्स में पॉसिबल है कि जब आप घर में चले जाते हैं तो आपके पास वाईफाई पॉइंट लगा हुआ है, तो वाई नॉट यूज़ रदर दैन कम्युनिकेटिंग ओवर दिस सेलुलर नेटवर्क्स, आप क्यों नहीं अपने मोबाइल के साथ ही कम्युनिकेट कर लेते हैं, आपकी डाटा कम्युनिकेशन जो ना वहीं से हो जाए। तो दिस इज़ वन ऑफ द कॉन्सेप्ट हाउ टू इंक्रीज दी डाटा रेट्स इन दी कन्वर्ज नेटवर्क्स। फिर अगर हम कन्वर्जेंस में भी बात करें तो डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो ना इसमें आ जाती हैं। हमारे पास फिक्स नेटवर्क्स है, वाईफाई नेटवर्क्स हैं, सेलुलर नेटवर्क्स हैं, सैटेलाइट नेटवर्क्स हैं, और उसमें जो डिफरेंट किस्म की जो इश्यूज आ सकते हैं जिनको हम जो ना वो हमें जो इससे रिजॉल्व कर सकते हैं
वो ट्रैफिक एक तो ये है कि हम ऑफ कोर्स जो सेलुलर नेटवर्क्स की ट्रैफिक जो ना उसको ऑफलोड कर सकते हैं वाईफाई के ऊपर। फिर ये कि मल्टी एक्सेस एज है, कंप्यूटिंग कन्वर्जन्स है, एक्सेस और एग्रीगेशन जो ना वो जो एक्सेस नेटवर्क्स हैं वो एग्रीगेट किए जा सकते हैं। सीमलेस हैंड ओवर और मोबिलिटी की जो ना वो पॉसिबिलिटीज़ जो ना होती हैं। इसी तरह से हम जैसे हमने बात की कि इंटीग्रेटेड कोर की पॉसिबिलिटी है, और इसके अलावा हम जॉइंट ऑप्टिमाइजेशन हम जो ना कर सकते हैं। जो रिसेंट अप्रोचेस हमने अभी अब देखी हैं उसमें अगर हम देखें तो इंटेलिजेंट एक्सेस सिलेक्शन नेटवर्क है कि हम कौन सा नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं। शुड आई यूज़ दी वाईफाई और शुड आई यूज़ दी सेलुलर नेटवर्क। ऑफ कोर्स आप सेम ऑपरेटर के साथ काम कर रहे होंगे, लेकिन आप इस चीज़ को डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे कहाँ से जो ना डाटा रेट जो ना वो हाई मिल सकता है। इसी तरह से ट्रैफिक स्टीयरिंग एंड लोड बैलेंसिंग के कुछ एल्गोरिथम्स हैं जिनको हम जो ना इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। लिंक एग्रीगेशन और मल्टीपाथ ऑप्टिमाइजेशन के भी कुछ जो ना वो हमारे पास सॉल्यूशंस हैं। फिर हम देखें प्रेडिक्टिव हैंड ओवर है। आई एम जस्ट गोइंग, मैं क्विकली इन चीज़ों की तरफ से जा रहा हूँ बिकॉज दीज आर सम वेज दैट वी कैन यूज़ फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द डाटा रेट्स। फिर अगर हम इम्प्रूव फीचर्स की बात करें तो हमने देखा बहुत सी जो ना डेवलपमेंट्स जो ना रिसेंटली हुई है। माइमो, बीम फार्मिंग, मिलीमीटर वेव लेंथ, रेज एन आर आई आर एस एंड स्पेक्ट्रम शेयरिंग। सबसे पहले अगर हम देखें तो जो हमारा बीम फार्मिंग है, बीम फार्मिंग बेसिकली आप देखें हमारे पास इश्यूज़ थे कि हम सिग्नल की जो पावर है वो सर्टेन लिमिट तक ही इंक्रीज़ कर सकते हैं, और ये है कि हमारी चैनल विड्थ भी जो ना सर्टेन लिमिट सर्टेन ही जो ना वो हो सकती है। तो फिर हम किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं, यानी कि डाटा रेट्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, या हम अपने जो ना चैनल्स की कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए एक जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया था वो बीम फार्मिंग था। बीम फार्मिंग में ये है कि आप मल्टीपल जो एंटीनास जो होते हैं उनको उनका एंगल और उनका फेज़ और उनका जो डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं उनको आप इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि जब वो पर्टिकुलर यूज़र के साथ पहुंचते हैं तो वो सारे के सारे एक दूसरे को एडिटिव होते हैं। हमें उनकी सबकी सिग्नल स्ट्रेंथ जो ना वो एडिटिव हो जाती है। इस तरह से वो ये इस अपीयर होता है कि जैसे जितने भी एंटीनाज हैं, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक एंटीना प्रीवियसली अगर आपने देखा होगा तो एक ही एंटीना आपको फिक्स जो ना नज़र आ रहा होता है, लेकिन आजकल अगर आपने एंटीनाज को देखे तो उसमें एक एंटीना अरे होती है जिसमें मल्टीपल जो ना चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं, इवन के मोबाइल टावर्स के ऊपर भी। इसी तरह से हमारे जो वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स होते हैं उसके ऊपर भी इसी तरह से होता है। अब ये कि ये सारे के सारे एंटीनाज इंडिपेंडेंटली ऑपरेट नहीं कर रहे होते, बल्कि दे ट्राई टू मेक ए बीम टूवर्ड्स दी सर्टेन एरिया और टू सर्टेन यूज़र, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे जो ना वो हमारे ये कि स्ट्रॉन्गर सिग्नल एट द रिसीवर एंड हो जाता है और इंटरफेरेंस रिड्यूस हो जाती है और रेंज एक्सटेंड हो जाती है। फिर ये कि कम्युनिकेशन जो ना रिलायबल हो जाती हैं क्योंकि बिट एरर रेट्स जो ना वो बहुत कम हो जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स की जो ना वो अवेलेबल जो बीम फार्मिंग के मेथड्स हैं वो स्टैटिक बीम फार्मिंग है, अडॉप्टिव बीम फार्मिंग है एंड रेट्रो डायरेक्टिव बीम फार्मिंग आपने इसमें देखा होगा। तो जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो काम इसमें जो ना करंटली अंडर रिसर्च हैं वो है बीम सिलेक्शन और प्रेडिक्शन, चैनल एस्टिमेशन एंड CSI इन केस ऑफ द बीम फॉर्मेशन एंड अडॉप्टिव बीम फार्मिंग विद द रिइंफोर्समेंट लर्निंग। इसी तरह से और भी कुछ काम है, फॉर एग्जांपल मल्टी यूज़र बीम फार्मिंग। अगर आपने प्रीवियस स्लाइड के ऊपर वीडियो देखी होगी तो सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र बीम फार्मिंग को इंट्रोड्यूस करवाया गया, उसको डिमॉन्स्ट्रेट किया गया था कि वो किस तरह से काम करती है। फिर माइमो की डिफरेंट और टाइप्स भी हैं, स्पेशल माइमो है, मल्टी यूज़र माइमो है, मैसिव माइमो है, फुल डायमेंशनल माइमो है, नेटवर्क माइमो है एंड कोऑर्डिनेटेड माइमो के जो ना वो माइमो पॉइंट्स भी जो ना पॉसिबल है। बेसिकली माइमो इज़ Excuse me, सॉरी sir. Sorry for disturbing. Sir, time almost end हो चुका है तो kindly Q&A session start कर दें स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, चले हम इसको जो ना अभी इसको जो ना वो रैप अप कर देता हूँ ताकि स्टूडेंट्स एक दफ़ा जो ना उसको देख लें। अगर हम इसमें देखें तो माइमो की जो डिफरेंट जो यानी कि जो टेक्निक्स हैं वो चैनल एस्टिमेशन माइमो है, प्री कोडिंग ऑप्टिमाइजेशन है, सिग्नल डिटेक्शन की जो ना ये भी जो ना एक पॉसिबिलिटी जो ना वो हो सकती है। और इसी तरह से मेरा ख्याल से मैं इसको स्किप करता हूँ। और जो चीज़ हम जो ना वो उसमें मिलीमीटर वेव लेंथ की जो ना वो बात करें तो उसमें भी हमारा ये एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम है जिसको हम जो ना वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसमें कुछ टास्क हैं जैसे बीम सिलेक्शन और बीम फॉर्मिंग के अलाइनमेंट के, ये भी जो ना यहाँ पे जो ना वो किए जा सकते हैं। फिर अगर हम इनकी बात कर लें नेक्स्ट की रिस्क की, हमने रिस्क की अभी बात की। आई थिंक दिस इज़ द वन ऑफ द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी दैट वी नीड टू सी वेयर रिस्क बेसिकली जो हमारी जो कवरेज के इश्यूज़ होते हैं, मिसाल के तौर पर जो सिटीज़ वगैरह होते हैं
तो उनमें बुनियादी तौर पे हम जो ना एयर जो रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, जो कि रिकन्फिगरेबल होती हैं और इंटेलिजेंट होती हैं। मेरा ख्याल आई थिंक इसके साथ साथ अगर आपके पास टाइम की लिमिटेशंस हैं तो हम सवाल जवाब क्वेश्चन आंसर भी शुरू कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो स्टूडेंट का वो भी हम अभी जो ना उसको ले सकते हैं। तो मीन हाइल मैं इसको जो ना वो कंटिन्यू करूँगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ क्वेश्चन को जो ना ओपन कर आप पूछने दें स्टूडेंट को ना। लेडीज एंड जेंटलमैन, जिनके क्वेश्चंस है वो काइंडली हैंड रेज कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। माय नेम इज अहमद मोहम्मद चौधरी फ्रॉम बीएस साइबर सिक्योरिटी 6 सेमेस्टर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि बेसिकली आपने पहले बताया कि जैसे जैसे जो इन टाइम इंक्रीज हो रहा है, हम दुनिया एडवांसमेंट की तरफ जा रही है। जैसे जैसे दुनिया एडवांसमेंट की तरफ जा रही है तो आप कह रहे थे कि प्रॉपर क्वांटम एंड कंप्यूटिंग नेटवर्किंग में इन्वॉल्व हो रही है। तो फिलहाल तो क्वांटम कंप्यूटिंग ज्यादातर तो एडवाइसेस एक्सेसिबल ही नहीं है, और ना रिसोर्सेज हैं इतने कि प्रॉपर उनको एक्सेस किया जा सके, क्योंकि ना और क्वांटम कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग ना इतनी पावरफुल हुई है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूबिट्स लाइज इन इट। और जो ज्यादा बना है वो मेरे ख्याल से 512 क्यूबिट का बना है। आप किस तरह क्वांटम कंप्यूटिंग को नेटवर्क्स में लाओगे, तो इसके बारे में थोड़ा आइडिया दे दीजिएगा। अच्छा, इसमें जो ना क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स जो ना वो अभी हो रही हैं। वहाँ मेरे हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली क्वांटम नेटवर्क्स का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी तक जो ना रियलाइजेबल नहीं है, और इसको हम प्रैक्टिकली जो ना वो देख नहीं सकते। लेकिन जो क्वांटम कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम साइबर सिक्योरिटी में, डाटा इनक्रिप्शन में जो यूज़ करते हैं, क्योंकि हम ऑफ कोर्स जो इंटेंगलमेंट है और जो क्यूबिट्स की स्टेट है उसको यूज़ करते हुए ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ये डाटा कहीं पे चेंज हुआ है कि नहीं चेंज हुआ है। स्पेशली क्योंकि फोटॉन लेवल के ऊपर इट इज़ ईजियर टू डू दैट वन, और इसके इस मकसद के लिए डिफरेंट सोल्यूशंस भी अवेलेबल हैं जो क्वांटम इनक्रिप्शन जो ना वो प्रोवाइड करते हैं। आल्दो के ये जो ना अभी तक प्रैक्टिकली यूज़ नहीं हो रहे हैं। आई मीन हो सकता है कुछ यूजेस हैं भी, लेकिन ये अभी तक लैब इन्वायरमेंट के अंदर लिमिटेड हैं। बट स्टिल क्वांटम कॉन्सेप्ट्स एंड द क्वांटम नेटवर्क्स दे विल रेवोल्यूशनलाइज द होल थिंग्स। अगर आप देखें तो हम लेगेसी नेटवर्क्स में देखें और आज के डिफरेंस में देखें तो उस वक्त लेगेसी नेटवर्क्स की एरा में हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ जो ना वो हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। क्वांटम कंप्यूटिंग इज़ अंडर डेवलपमेंट, और मोस्ट प्रोबेबली इन द फ्यूचर देयर विल बी लॉट ऑफ। आज का अगर हम देखें तो डेवलपमेंट तो बहुत फास्ट है। प्रोग्रेस जो ना वो साइंटिफिक जो स्पेशली कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स के फील्ड के अंदर इतनी फास्ट प्रोग्रेस है, इतनी एजिलिटी है कि क्विकली हर 6 से 7 महीने के बाद नई डेवलपमेंट्स जो आ रही होती हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली देयर विल बी सम प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस अवेलेबल फॉर द एटलीस्ट फॉर द साइबर सिक्योरिटी फ्रॉम द इनक्रिप्शन पॉइंट ऑफ व्यू। Quantum security solutions will be there available. Ladies and gentlemen, as we come to the end of this insightful seminar on emerging trends in computer networks, I would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed guest, Dr. Speaker, Dr. Arif Hassan Rashid, for taking the time to share the valuable knowledge and expertise with us. Your talk has truly enlightened us and opened a new perspective on the future of computer networks.